Yes, good afternoon, students. Join fast so that let us start. Join fast, students. So let us start today with the new lesson. New lesson that is some natural phenomena. So some natural phenomena. Students, listen here. That remember tomorrow onwards I am not going to send you the link. You have to directly watch it on the YouTube only. Okay, you can join directly. The common link is there. Okay, because it is not unlisted. So it is not unlisted. You can directly go on the YouTube and you can see the live. Okay, understood now. So I will not. Don't wait for the link. Don't wait for the link. Remember that. Okay, understood. So next lesson, that is some natural phenomena. Some natural phenomena here means because last time also in 7th class we have learned about the cyclone, then the storms, thunderstorms, cyclones, again what is that called as small means different natural calamities. These are all natural calamities. In that also you have learned about the tornadoes, etc. Now this year, again you are going to study about the two more calamities, how do they occur, and they are the earthquake and the lightning. So earthquake and lightning we are going to see. Okay, they come under the natural phenomena because these are all occurring naturally. They occur in the nature. So prediction is again we can predict it, but still some lacunas are there, isn't it? Now, first about the lightning. Now, what is this lightning? In here also we can see, we will study about the charges and all that. So, lightning is one of the oldest observed natural phenomena that has fascinating people for ages. Means this is again we can see that how the lightning occurs, or what is this, from where does it come. So many things are there which is very curiosity for us, isn't it? Now in ancient times people thought that lightning bolt were thrown from the heaven by angry gods. So मिथ भी हुआ करता था एंशियंट जमाने में कि लाइटनिंग जो है वो एक बिजली है जो भगवान गिराता है अगर आप पे वो नाराज है तो, बट इट इज नॉट लाइक दैट अकॉर्डिंग टू द साइंस. नाउ there is a proof when we can study, we know, or we are going to learn now what is this lightning, how does it occurs, and all this. Okay, so here we can say that in the ancient times, like it appeared until the 70s. Now in 1745 it has been proved that electricity could be collected and stored for indefinite period. So after that, these lightning means after we can say that when it came into knowledge in 1775 that electricity, or here electricity could be collected and stored. So
In 1752, after that, then in 1752, American scientist Benjamin Franklin discovered that there is an electric discharge between the clouds. Then this Benjamin Franklin, he discovered that because till 70s there was people knew about the electricity, then people could know that electricity can be stored और फिर ये जो मेन चीज है 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये डिस्कवर किया कि there is an electric discharge between means between the clouds means the clouds they are charged when they are full when they are full of charges बारिश के समय या जब वो कोलाइड होते हैं रब होते हैं एक दूसरे से because we have seen that when the rubbing friction takes place then charges are developed and charge develop होने के बाद what happens these charges when the clouds are loaded with the charges then it is getting attracted by the means two things can happen either the charges get discharged automatically or sometimes the charges get attracted towards the earth because of the gravitational force. So these may happen and it gets discharged and this is the reason for the lightning. This is the reason for the lightning. ये एक तरह का इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है by the clouds. By the clouds. Understood, students? Have you understood? Now, so detail we are going to see now. But, so here, this, there is a little discharge between the clouds that produces a spark and it is the electric spark between the clouds and the earth that appears as a lightning. तो ये जो ऐसे जो दिखती है this is a electric spark after electric discharge between the clouds and the earth क्योंकि ये पूरा कभी-कभी जमीन तक आती है जो lightning होती है sometimes it goes inside the earth if it is very powerful पूरा cloud से लेके earth तक ground तक आती है and it gets discharged into the soil or the ground. So here this part we can see and ये जो lightning has strike which spark which we can see that is called as the lightning. तो इसे जो हम देख सकते हैं इस discharge को that is called as lightning. It is called as lightning. Okay. So his famous kite experiment proved this fact. So बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक और एक्टिविटी भी है द काइट एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट साउंड गॉट लो ओके नाउ इज इट ओके नाउ टेल मी now it is low only still it is low students okay so might be because of the sometimes because of network problem might be there okay low only okay so let it be now what we can do so here uh, very low okay so now uh, I am helpless now I cannot do anything because if it is low nothing is there to make it high
because it might be because of the network also, network problem. Okay, then so now what is the actually the source, or what are these charges, all about the natural phenomena that we are going to see now. Okay, so first about the static electricity. तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के पहले भी हमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना बहुत जरूरी है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. So what is this static electricity? So स्टूडेंट्स, अभी जो हमने फोर्स पढ़ा था, isn't it, फोर्स एंड प्रेशर में कांटेक्ट फोर्सेस और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस पढ़े थे. So in that we have learned about the electrostatic force, isn't it? Electrostatic force. तो ये है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. So first of all about the electrostatic force. Static electricity. So this is also a form of electricity. Static electricity. Electrostatic force आपने पढ़ा था, generated due to the rubbing. Force जिससे वो attract करता है. So the same thing here, something is generating, isn't it? Electricity is generated या energy is developed जो उसको attract करता है. So that energy is called as static electricity. So let us see. So about 2500 years ago, a Greek named Thales found that when a piece of amber was rubbed with fur, it attracted the small pieces of feathers. So he amber means एक छोटा सा ये होता है टाइप ऑफ पीस, स्टोन, एम्बर स्टोन होता है. तो उसको रब करने से फर जो है वो अट्रैक्ट होता है. He saw that. So it attracted small pieces of feathers, straw, leaves and dust. Today, we know that many other materials such as plastic, glass, hard rubber, ebonite, etc. show the same effect. You can observe yourself. So, just by rubbing, so we can also observe, we can also experience these type of force. By rubbing, we can bring the, if we are rubbing the foam and bringing it near the piece of paper, so the paper also get attracted. Already this we have seen in the lesson, isn't it? हमने force में पढ़ा है. So this is all come under the static electricity. So the first example, rub a plastic pen or the comb on your sleeves or on your dry hair. Hold it near some tiny pieces of paper. So the tiny pieces of paper get attracted toward the plastic pen or the comb. तो ये एक है हमारा पहला एग्जाम्पल जिसमें हमने कोम लिया, रब किया, पीसेस के पास लेके गए, पीसेस गेट अट्रैक्टेड. सेकेंड एग्जाम्पल, इन्फ्लेटेड बलून. बलून को हमने फुलाया है एंड rubbed with the woolen cloth and bring it closer to the wall of the room. The balloon strike to the wall. तो तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जस्ट ऐसे ऐसे बलून को चिपकाया होगा विदाउट एनी सेलो टेप. रब करो, रब इट विद द क्लॉथ और उसको जाके ऐसे वॉल पे लगा दो. इट विल गेट स्टिक टू द वॉल. रिमेंबर दैट इट विल गेट स्टक टू द वॉल. दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. रबिंग से क्या होता है, फोर्सेस डेवलप. ओके, देन अनदर एग्जांपल और एक है. सो यू हैव हर्ड क्रैकलिंग साउंड व्हेन यू टेक ऑफ योर सिंथेटिक और वुलन क्लोथ्स. हम स्वेटर निकालते समय
या ब्लैंकेट लेते समय एक क्रैकलिंग साउंड आता है, किट 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 ऐसे साउंड आता है. So these sound is because of the charges, because of the electrostatic force. Then when you take off your synthetic or woolen clothes in the dark, you can see the tiny sparks, isn't it? So everyone, even we can see in the winter now when we are taking the blankets, so you can see such kind of noise also and sound भी आता है और spark भी दिखता है. अंधेरे में स्पार्क दिखाई देगा और उजाले में सिर्फ आवाज सुनाई देगी. Isn't it? बच्चों सुनाई देती है कि नहीं? Yes or no? Okay, so these are all examples. These are examples of your synthetic. It is the example of electrostatic force. Example of electrostatic force. Okay, so when material behave the way as the comb, balloon, synthetic fibers, etc. behave on rubbing, they are said to be electrically charged. तो ये सब जब किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं एट दैट टाइम दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकली चार्ज. And these things, objects are all electrically charged due to rubbing. ये सब होता है rubbing से. Already we have seen this in the in the chapter force and pressure. Non-contact force में हमने इसे पढ़ा है. Okay, so when you take off this, all the objects you can see they are getting electrically charged due to rubbing. So here the electrical charges on such bodies cannot flow continuously and remain bound on their surface. तो ये जो है these charges which are obtained due to rubbing, they are not flowing. ये ऐसे नहीं है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा सकते हैं. They remain on the surface and that is why they are called as static. Static electricity. अभी समझ में आया उनको static क्यों कहते हैं? So here the electrical charges they cannot flow continuously. These charges which are developed on the bodies due to rubbing, they cannot flow continuously. बस एक मिनट हो सकता है या बहुत कम टाइम के लिए या कभी कभी सिर्फ उनके बॉडी पर रहता है बट वो ट्रांसफर नहीं होता है. So that is why these are called as static electricity. That is why they are called as static electricity. When the charges move, they constitute an electric current. So, अगर चार्ज मूव होता है ये स्टैटिक है. This is static electricity. And if these moves, अगर चार्जेस मूव होते हैं, move, then it is called as electric current. अगर ये मूव होता है चार्जेस तो फिर हम इसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. And if the charges are not moving, then it is called static electricity. ये याद रखो. जब चार्जेस, सुनो बच्चों, रिमेंबर एकदम क्लियर कट, जब चार्जेस बॉडी में रह जाते हैं, सरफेस पे रहते हैं, then they are called as static electricity. If they flow from one body to another या पास होते हैं, then it is called as electric current. क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है, पूरा फ्लो होता है and it is connected from, it flows from one body to other
and that is called as electric current. लेकिन ये जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पूरी अलग है. ओके, अंडरस्टूड? देन नाउ, so when charges move, they constitute an electric current. Thus, an electric current is continuous flow of charge. So, electric current is a continuous flow of charge. Is flow of charges. Flow of charge. Okay. So now, types of charges and their interaction. Types of charges and their interaction. अब हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कि क्या क्या चार्जेस है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. सो व्हाट आर द चार्जेस? So, type of charges. So here, for that again the same thing you are going to learn once again, the atom. So here, so again the same thing, there are three states of matter. matter है means पर्टिकुलर उसका एटम होगा, एटम है, the atom consists of the nucleus and the orbit जिसमें इलेक्ट्रॉन्स है, isn't it? और फिर से इलेक्ट्रॉन्स अगर है तो वो चार्ज रहेगा. So here, so we know that all the matters is made up of tiny particles called as atom. जो मैटर का जो सबसे छोटा यूनिट है, इट इज कॉल्ड एज एटम. So matter, all the things that exist on the earth, जो भी चीज अर्थ पर अगर है, अगर हम कहते हैं कि कोई चीज है, तो है means it is a matter. Matter is of three states, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और इनके जो सबसे टाइनी पार्टिकल्स हैं वो है टाइनी पार्टिकल्स. सबसे सभी तीनों स्टेट्स के टाइनी पार्टिकल्स है हमारे, दे आर एटम्स. टाइनी पार्टिकल्स called atom. एंड ये एटम ऑलरेडी मैंने बता दिया था आप लोगों को, isn't it? So atom, this one I have already told you in which lesson, I think in the before this one, that is chemical effects of electric current में मैंने बता दिया था. केमिकल इफेक्ट में बता दिया था एटम के बारे में, isn't it? So now here, so it comprises, each atom comprises of the two types of equal charges, positive and negative. Equal charges, once again, इसीलिए पढ़ो टेक्स्ट बुक पढ़ो. So each type of equal charges, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव रहेगा एटम के अंदर. अगर 4 प्रोटॉन्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, 5 प्रोटॉन्स हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे. एंड दैट इज व्हाई इट comprises, atom comprises equal number of charges. Then the atom as a whole is neutral. So atom is always, it is neutral. और जो आयंस होते हैं, आयंस, दे आर चार्ज. कुछ आयंस गेन करते हैं, कुछ आयंस डोनेट करते हैं, वो आयंस होते हैं. दिस इज एटम. एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल बिकॉज इट हैज सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस.
याद रखो, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। देन but if the quantity of positive charge is more than negative charge, then the atom is said to be positively charged or vice versa। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज, और अगर प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज। ये जो चार्जेस होते हैं ना, चार्ज ऑफ रबिंग से या जो भी, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्जेस इधर आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस चले जाते हैं। सो लाइक दैट अगर हम कहेंगे कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, दैट मींस पॉजिटिव चार्जेस आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ जस्ट सी हियर, न्यूट्रल, देन क्या है ये? You only tell me, students, you tell me what is the charge over here? Tell me this one, what is the charge over this body? Sandhya, it is negative। Now here, then this is positive। So have you understood now? Just see it carefully। अगर दोनों चार्जेस एटम में हमेशा बराबर होते हैं, ये तो आयन्स होते हैं, और अगर उस बॉडी में नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन इट इज नेगेटिवली चार्ज, protons are more then it becomes positively charged। Okay, understood students? Have you understood? So yes, positively charged, negatively charged, this is positively charged, पॉजिटिव प्रोटॉन्स अगर ज्यादा है, इसमें प्रोटॉन्स ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इट विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन ज्यादा है पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अंडरस्टूड नाउ? समझ में आ रहा है क्या सबको? देन सो इट इज सीन दैट like charges repel each other, positive charges attract each other, ये भी सबको पता है, isn't it? Like charges repel, unlike charges attract। Okay, so everybody know that this is common for all। like charges अगर है वो repel हो जाते हैं, unlike charges है then they attract each other। Okay, so here also you can just see that activity में क्या हो गया है कि यहाँ पर the rod is having both the rod which is hanging and which is with the hand, it is having positive charges, जिसके कारण वो रिपेल हो रहा है, रिपेल
activity 1. Everyone see the activity 1. Everyone just see the activity. इसमें क्या हो रहा है? Glass rod is by rubbing both the rods become positively charged. Ebonite rods become positively charged. और जब ये एबोनाइट रॉड हमने हैंगिंग रॉड के पास लाया है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देन इट विल रिपेल इच अदर. ओके, देन सेकेंड इसमें एक इसमें निगेटिव है, दूसरे इसमें भी निगेटिव है, देन ऑल्सो दे रिपेल. और फिर थर्ड इसमें सी में A, B and C. Here also repel, attract. Because ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्जेस है. यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, like that. Understood, students? Okay, have you understood? So tomorrow, समझ में आया ना? चार्जेस, ये सब चार्जेस के बारे में है. Now tomorrow we will see how the charges are getting transferred. Tomorrow we will see how the charges are getting transferred. So here, just listen carefully. Tomorrow you have to draw the diagram of an electroscope. Now, just I will read for you. Electric charge can be transferred from charged object to another through a metal conductor. तो इसके लिए metal conductor अगर हमें transfer करना है, remember, then we need a metal conductor. So, because metal conductor से क्या होता है? Metal conductor is a good conductor. So metal only we are using for conduction of the charges. So now here in the activity 2, activity 1 में सिर्फ हमने देखा है attraction, repulsion. Okay, attraction and repulsion. Now in activity 2, that is electroscope. This electroscope we can make at home also. सिंपल सा जार लेके और एक कंडक्टिंग वायर लेके उसमें एक स्मॉल, यू मे नीड द एल्यूमिनियम फॉइल को उसमें डाल दो, स्ट्रिप बना के, और उसको ये जो वायर है वो बीच में से आपको निकालना है बॉटल के लिड से, और बॉटल पैक कर देना है एंड उसको ऐसे टी शेप में लगा देना है, so that the wire we can use for conduction. Okay, so now activity 2 में actually क्या होता है, that we will see it tomorrow. Okay, so activity 2 के लिए everyone have to draw electroscope. draw कर लेना है, ये तुम्हारा होमवर्क है. draw and read it. ड्रॉ एंड रीड फॉर द होमवर्क. ये होमवर्क है तुम्हारा. ड्रॉ भी करना है, रीड भी करना है. रीड करके आना है, देन जस्ट आई विल एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोस्कोप. पूरा इलेक्ट्रोस्कोप एक्सप्लेन होगा कल. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस वन वी कैन मेक इट एट होम आल्सो. सिंपल, अगर आपके पास बेल जार भी होना जरूरी नहीं है. स्मॉल, इफ वी हैव द ग्लास jar, we can make it. If we have plastic, थोड़ा सा charges क्योंकि glass jar जो है it cannot transfer the charges, और इसीलिए glass jar mostly use होता है. Otherwise प्लास्टिक भी चलेगा. ओके, सो एक है हमारा सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप दैट वी कैन मेक इट, एंड एक है गोल्डी इलेक्ट्रोस्कोप जिसमें मोस्टली किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का चार्ज हम पता कर सकते हैं, और we can also know the charge on the body. We can also know whether the body is charged or not. Understood? So this electroscope, जो ये electroscope है, Goldie electroscope is used to
know the charges on the body and to know whether the body is charged or not. Understood now? So thank you students, and do the homework. और सबसे पहले असाइनमेंट देना मत भूलना है। असाइनमेंट जल्दी से दो। अगर एग्जाम आ जाती है और असाइनमेंट भी मांगेगा तो अगर तुम्हारा असाइनमेंट नहीं रहेगा, आई विल नॉट गिव यू द मार्क्स, रिमेंबर। So thank you students.